Hello CAT aspirants, hello law aspirants, you are doing wonderful in your sessions of inferences and your answers is my Bonvita cup. Your criticism as well as your eulogizing, praising, applauding, commending the videos is something which we look forward to. And Law Prep family is always ready to offer you wonderful inferences, questions, every question which will lead you nearer to your goal. And here we have the next two passages of the inference drawn ones. I have since talked about a lot of the inference. I move on to which is because in the last type also I talked about likely to be true, and you have now understood thoroughly, crystal clear it must be, that what is actually inference. Now, since I've already done these passages with you, some 8, and I'm turning to the 9th passage directly with you. This is the 9th passage. Okay, let me read for you. Sales taxes affect poor people more severely than wealthy people. Sale tax किसको affect करता है? Poor people more severely, means affects them, but then wealthy people. Wealthy people are not that affected. Intensity of effect on wealthy people is less compared to poor people. When all purchases of consumer goods are taxed at a fixed percentage, you do it. In that case, I'll just remove this 1 minute. Right. So, fixed percentage of the purchase price, poor people pay a larger proportion of their income in sale tax. Who gives the larger proportion of their income in sale tax? Poor people. Then wealthy people do. My flowchart, my inference. Sale tax affects which? Poor people or wealthy people? Sale tax is affecting more, right? Affect तो दोनों पे करता है. More किसको affect करता है? Poor people. When all purchases of consumer goods are taxed at a fixed percentage, जब सारे consumer goods को आप fixed percentage पे tax करते हैं of the purchase price, poor people pay a larger proportion of the income in sale tax. Poor people क्या कर रहे हैं? Large portion अपनी income का किस में दे रहे हैं? Sale tax. Proportion of income किस में दिया? Sale tax में. And then wealthy people do. So poor people have less income, उसमें से आधा तो sale tax में ही चला गया, बचा गया कुछ नहीं. बेचारे poor people ही suffer करते हैं सबसे ज़्यादा. Poor people and middle class people are always attacked. ठीक है, चलिए अपना inference कुछ नहीं, बैक ऑफ द माइंड क्लियर, और आप क्वेश्चंस बहुत कॉन्सेंट्रेट करके फोकस अटेंशन से एकदम मेटिकुलसली करते हैं. Poor people constitute a larger proportion of tax-paying population than wealthy people do. बताया टैक्स, सेल टैक्स ज़्यादा अफेक्ट करता है, बट सेल टैक्स पुअर पीपल लार्जर प्रोपोर्शन में देते हैं. लार्जर प्रोपोर्शन क्या है? उनकी इनकम का लार्जर प्रोपोर्शन सेल टैक्स में जाता है. पुअर पीपल लार्जर प्रोपोर्शन नहीं होते. You understood, dearies? CLAT aspirants, focus. Yes. You can't do justice to your work if you will choose such wrong choices. Poor people spend a large proportion of their income, large proportion tax का नहीं, income का, on purchase of consumer goods than wealthy people do. Of course, consumer goods खरीद रहे हैं, proportion income का ज़्यादा उस पे लगा रहे हैं, जब भी तो income ज़्यादा sale tax दे रहे हैं. ठीक है, रख सकते हैं स्टैंड बाय आंसर. वेल्दी पीपल पे ऑन एवरेज अ लार्जर अमाउंट ऑफ सेल टैक्स. बिल्कुल लाइन क्लियर कह रही है, लार्जर अमाउंट ऑफ सेल टैक्स नहीं, पुअर पीपल ज़्यादा देते हैं और अफेक्ट भी ज़्यादा वो होते हैं. The total amount spent by poor people on purchase of consumer goods exceeds the total amount spent by the wealthy people on consumer goods. Total amount, कितना amount spend करते हैं? हम ये कह रहे हैं larger proportion income का जो है, that is poor people spend on purchase of goods and
Poor people pay a larger proportion of their income in sale tax. Wealthy people don't pay that much. Exceeds, how can it exceed? Wealthy people may buy many things because they have a lot of money. So it doesn't affect, suppose a poor person's salary is 20,000, 5,000, 10,000. A wealthy person's salary is 2 lakhs, 4 lakhs. So उसमें से वो कुछ portion spend करते हैं. It doesn't affect the income. Poor people have very less income. So it affects them thoroughly. So poor people, now when you compare B&D, poor people spend a larger portion of the income on purchase of foreign goods than wealthy people. We don't know how much tax it, but do they spend? But total amount of income से आप taxes नहीं निकाल सकते dearies, क्योंकि उनकी income कम है poor की, proportion उसमें से ज़्यादा खरीदारी में निकालते हैं और tax pay करते हैं, तो problematic होता है उनके लिए. Wealthy की तो income ही इतनी ज़्यादा है, तो उसमें से वो कितना भी proportion of things खरीद ले, tax कम या ज़्यादा, it doesn't affect their income. Got my point, what I'm trying to say? Okay, one more passage, wonderful one for you. Knowledgeable and well-informed people generally gather information. Which category of people we are talking of? Knowledgeable people and well-informed people gather knowledge from information from several divergent sources before forming an opinion. मतलब ओपिनियन बनाने से पहले कहाँ से लेते हैं? सो इंफॉर्मेशन डाइवर्जेंट सोर्सेस से. However, most news organizations view foreign affairs solely through the eyes of our Ministry of Foreign Affairs. देखिए मैंने क्वेश्चंस घुमा के दिए हैं, पैसेज को ट्विस्ट टर्न करके आपके सामने प्रेजेंट किया. नाउ व्हाट इज इट ट्राइंग टू से? बट मोस्ट न्यूज ऑर्गेनाइजेशन, जितनी न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हर चीज़ को किसकी नज़र से देखती हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स. मींस न्यूज़ चैनल्स किस पे डिपेंड हो गए? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स. इन रिपोर्टिंग द पॉलिटिकल क्राइसिस इन फॉरेन कंट्री एक्स, हम कोई XYZ कंट्री ले रहे हैं, उसमें हमें क्या रिपोर्ट पढ़नी है? पॉलिटिकल क्राइसिस की. न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट फाइंड ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. इसका मतलब ये हुआ, फर्स्ट थिंग वेल इन्फॉर्म्ड, एक तो ये बात की, एंड नॉलेजेबल, ये दो कैटेगरी के लोग हैं. ठीक है, ये दे टेक सोर्सेज फ्रॉम, दे टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेयर? डाइवर्जेंट सोर्सेज. अलग अलग सोर्सेज इंफॉर्मेशन लेते हैं, फिर ओपिनियन बनाते हैं. ठीक है, इनका ओपिनियन डाइवर्जेंट सोर्सेज पे बेस्ड है. बट जो हमारे न्यूज़ इंफॉर्मेशंस है, ऑर्गेनाइजेशंस है, ये हमारी न्यूज़ चैनल्स या जितने न्यूज़ चैनल्स हैं, न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस है, ये किस पे डिपेंड करती है? फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स पे. ठीक है, तो इनकी न्यूज़ क्या हुई? ऑथेंटिक या अनऑथेंटिक? अनऑथेंटिक. क्यों? क्योंकि बाकी सोर्सेज से लेते ही नहीं है, दे डोंट टेक फ्रॉम द अदर सोर्सेज. अब वो ऑल्टरनेटिव सोर्सेज से जो लेते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन सही है. सो व्हाट इज इट? रिपोर्टिंग द पॉलिटिकल क्राइसिस इन फॉरेन कंट्री एक्स. अगर एक्स कंट्री की इंफॉर्मेशन चाहिए तो ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर करो. आई बात समझ में? व्हाट इज द राइटर ट्राइंग टू से? टू बी वेरी प्रिसाइज एंड क्लियर. चलिए देखते हैं. When a news source gives an account of another country that is identical to the Ministry of Foreign Affairs account, that reporting is biased. Do we talk of any reporting which is biased or not biased? No, dearies, we have no idea which is biased or not biased. We can't talk about it in general sense, right? To be objective, news media should avoid the Ministry of Foreign Affairs releases in their reports of foreign affairs. ऑब्जेक्टिव होने के लिए न्यूज़ मीडिया अवॉइड करे. इसको अवॉइड करे? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स रिलीजेस को, द रिपोर्ट. इट नेवर टॉक्स अबाउट अवॉइड देम, इट सेज प्लस किसका? न्यूज़ प्लस अदर सोर्सेस पर भी रिलाई करें, सिर्फ फॉरेन मिनिस्ट्री पे ही रिलाई नहीं करें. Reporting that is not influenced by Ministry of Foreign Affairs is usually more accurate and other sources. News foreign ministry की accurate है, but वो complete news नहीं है, completeness नहीं है. So what do we want? We want complete news. Complete news means foreign ministry affairs की news plus news from
other sources, right? The further situation, the alternative sources of information mentioned in the passage would probably not share the same views as the Ministry of Foreign Affairs. So when we have alternative sources, they may not have the same views. That means their views are divergent. What are their views? Totally different. You can see this matches here. Exactly same. Right. And so the answer is D, Delhi. It is easy to draw an inference when you read between the lines very carefully, understand the writer's point of view, and judge and form an opinion. Right, students? I hope you liked today's video too, and do like and subscribe the content, and I'll come up with longer passages. GMAT, CAT, CLAT all offer vistas of passages. I'll try to take up some more of the last year's CLAT passages where you have an inferences and where you may be stuck, so that it is a replica of CLAT and our students are able to do the things in a wonderful, passionate manner. Right, students? Thank you for today. Do like our channel and do subscribe it. We'll be looking forward to it. Thank you.